In the Supreme Court of Pakistan, Appellate Jurisdiction, present, Mr. Justice Munib Akhtar, Mr. Justice Shahid WAHEED, Mr. Justice IRFAN SAADAT Khan CPL as .211 and 213 of 2024. Against the order of the Lahore High Court, Lahore dated the 16th of January 2024 in WP number 2618 and 2664 2024. Umar Farooq Petitioner in both vs. Ali Imran Aslam and others. Respondents in both for the petitioner in both cases. Mr. Muhammad Shahzad Shaukat, ASC for Respondent number 1. Mr. Ahsan Bhoon, ASC via video link Lahore for ECP Mr. Khurram Shehzad, Addl. DG Law Mr. Falak Sher Legal Consultant. Date of hearing, the 30th of January 2024. Order Munib Akhtar, J. We have heard learned counsel for the petitioner as also the learned additional DG, Law, and learned legal consultant and also learned counsel appearing for the private respondent. 2. For detailed reasons to be recorded later and subject to such amplification and or explanation therein as may be deemed appropriate, these leave petitions are converted into appeals and allowed. The impugned judgments of the learned High Court are set aside with the result that the nomination papers of the petitioner, now appellant, for PP 107, Faisalabad, are deemed accepted and his name is deemed included in the final list of candidates for the general elections of 2024. This candidate shall पाकिस्तान में अपील का दायरा इख्तियार मौजूदा मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर, मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद, मिस्टर जस्टिस इरफान सादत खान CPL/S 0.21 और 213 ऑफ 2024 लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ लाहौर मौरखा 16 जनवरी 2024 WP में नंबर 2618 और 2664/2024 उमर फारूक दोनों में दरखास्त गुजार बमुकाबला अली इमरान असलम और दीगर जवाब दहिंदगान में दोनों दरखास्त गुजार के ये दोनों सूरतों में जनाब मोहम्मद शहजाद शौकत ASC जवाब दहिंदा नंबर 1 के लिए मिस्टर ahsan Bhoon ASC लाहौर वीडियो लिंक के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए जनाब खुर्रम शहजाद एडिशनल डिप्टी जनरल कानून जनाब फलक शीर लीगल कंसल्टेंट समाअत की तारीख 30 जनवरी 2024 तरतीब मुनीब अख्तर जय। हमने उलमा के वकील को सुना है। दरखास्त गुजार के साथ साथ एडिशनल डिप्टी जनरल कानून और सीखा भी कानूनी मुशीर और सीखे हुए वकील भी पेश हुए। निजी जवाब दहिंदा 2 तफसीली वजूहात की बिना पर बाद में रिकॉर्ड किया जाए और इस तरह के दावे इसमें तोसी और या वजाहत जैसा कि समझा जा सकता है मुनासिब ये छुट्टी की दरखास्तों को अपीलों में तब्दील कर दिया जाता है। इजाजत दी हाई कोर्ट के मुतजाद फैसले हैं। इस नतीजे के साथ एक तरफ रखो कि कागजात नामजदगी दरखास्त गुजार अब अपील कुनिंदा PP 107 फैसलाबाद को समझा जाता है कबूल कर लिया और इसका नाम हतमी फहरिस्त में शामिल समझा जाता है। 2024 के आम इंतखाबात के ये उम्मीदवार करेगा। In 2024's page no. 2. Immediately and forthwith, and it shall be the duty of the Election Commission to ensure that this is done, be allocated an election symbol. We may note that for this constituency the petitioner, now appellant, had filed 2 sets of nomination papers, both of which were dealt with in the same terms, and the writ petitions filed in this regard in the High Court by the private respondent were allowed vide impugned judgments, which are identical in all material respects. 3. The name of the candidate and his election symbol must appear on the ballot papers used in and for the general election to the constituency aforementioned, and the said election for this constituency must be held on the 8th of February 2024. As scheduled. Judge Islamabad, the 30th of January 2024. Naveed, * not approved for reporting.